नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकालवती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त निराकार। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाश नो स्वाध्याय આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં બીજા અધિકારની ગાથા 85 અને સળંગ ગાથા 212 નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। આ ગાથા એનો અનુવાદ ભાવાર્થ તથા પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ આ ગાથા ઉપર કરેલ પ્રવચનનો કેટલોક ભાગ કર્યો છે અને શેષ અંશ આજે લઈશું। તે પછીથી ગાથા 86 આપણે શરૂ કરીએ છીએ। તો અત્યારે પહેલા આપણે ગાથા 86 લઈએ છીએ। બીજા અધિકારની ગાથા 86 એના ઉपोद्घातમાં કહે છે કે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની યતિઓનો તફાવત દર્શાવે છે। તો ગાથા 86 જ્ઞાનીના મૂઢાના मुनिवराणा अंतरम भवति महत् देहम अपि मुंचति ज्ञानी जीव भिन्नम जीव आदि भिन्नम मन्यमान। 86મી ગાથાના અનુવાદમાં કહે છે કે જ્ઞાનીના મૂઢાના મુનિવરાણા महत् अंतरम भवति सम्यक दृष्टि भावलिंगी मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनियों में बड़ा भारी भेद है। सम्यक दृष्टि भावलिंगी और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनियों में बड़ा भारी भेद है। ज्ञानी देहम अपि जीव आदि भिन्नम मन्यमानः मुंचति, क्योंकि ज्ञानी मुनि तो शरीर को भी जीव से जुदा जानकर छोड़ देते हैं, अर्थात शरीर का भी ममत्व छोड़ देते हैं। तो फिर पुत्र स्त्री आदि का क्या कहना है, ये तो प्रत्यक्ष से जुदे हैं। और द्रव्यलिंगी मुनि लिंग में भेष में आत्मबुद्धि को रखता है। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनि और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनियों में बड़ा भारी भेद है, क्योंकि ज्ञानी मुनि तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी मुनि है, वो तो शरीर को भी जीव से अलग मानकर जुदा जानकर छोड़ देते हैं, अर्थात शरीर से एकत्व नहीं करते, ममत्व नहीं करते, शरीर का भी ममत्व छोड़ देते हैं। तो फिर बाकी के जो पदार्थ है उससे तो उन्हें ममत्व होता ही नहीं है। तो फिर पुत्र स्त्री आदि का क्या कहना है, ये तो प्रत्यक्ष से जुदे हैं। और द्रव्यलिंगी मुनि लिंग में आत्मबुद्धि को रखता है। जो लिंग लिया है, जो भेष लिया है मुनि का, उसमें से आत्मबुद्धि है। गुजराती में गाथा लईए। ज्ञानी तथा अज्ञानीओमां भेद छे एम कहे छे। 86મી ગાથા ગુજરાતીમાં આ રીતે છે કે જ્ઞાની ને અજ્ઞાની બે મુનિવરમાં બહુ ભેદ, જ્ઞાની તનને પણ તજે જાણી સ્વપર ભેદ। એનો વિસ્તાર કરતા કહે છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ ભાવલિંગી અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી મુનિઓમાં મહાન અંતર છે। ભાવલિંગી મુનિ કયા એટલે એ તો 7મા છઠ્ઠે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજની વાત થઈ, જેમને બાહ્યમાં ચોખ્ખું 28 મૂળ ગુણ સહિત દ્રવ્યલિંગ છે અને અંતરંગમાં
આત્માના સંવેદન સહિત ભાવલિંગ છે, અંતર્મુહૂર્તમાં તો પોતાના સ્વરૂપને સ્પર્શે છે, એવા એ ભાવલિંગી મુનિ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. અને મિથ્યા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી મુનિ કે જેને સમ્યક દર્શન થયું નથી અને એને દ્રવ્યલિંગ અંગીકાર કરી લીધું છે, તો એ બેમાં ઘણો ફેર છે. બાહ્યમાં એમ લાગે કે બંને મુનિ બરાબર છે, કેમ કે બાહ્યમાં ચારિત્ર બરાબર બંનેનું સરખું લાગે, પરંતુ અંતરંગ દશામાં ઘણો મોટો ફેર છે, શ્રદ્ધામાં ઘણો મોટો ફેર છે. અને એ જ રીતે પુરુષાર્થમાં પણ ઘણો મોટો ફેર પડી જાય છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ ભાવલિંગી મુનિનો પુરુષાર્થ એવો છે કે એ તો સમયે સમયે નિર્જરા કરતા જાય છે. એ બહારમાં છે, સવિકલ્પ દશામાં છે ત્યારે પણ નિર્જરા કરે છે, અને અંતર્મુહૂર્તમાં તો સ્વરૂપને સ્પર્શે છે, સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા અને લીનતા કરે છે. તો એમને એ વખતે સંવરની દશા છે, આશ્રવ થતા નથી, બંધ પડતા નથી, અને ઘણી નિર્જરા થતી હોય છે. જ્યારે મિથ્યા દ્રષ્ટિ દ્રવ્યલિંગી મુનિ ને બાહ્યમાં ચારિત્ર છે, એને સમ્યક દર્શન થયું નથી, સ્વરૂપને જાણ્યું નથી, સ્વાનુભૂતિ થઈ નથી, એટલે એમને એવી સંવર સહિત નિર્જરા થતી નથી. એમને માત્ર પોતાનું બાહ્યમાં જે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું છે એની સભાનતા હોય છે, એટલે એમને શુભભાવ હોય છે, અને શુભભાવને કારણે એમને પુણ્યના બંધ પડે છે. પણ છતાંય ક્યારેક સાથે ને સાથે અલ્પ પ્રમાણમાં અને એવા પાપના બંધ પણ પડે કે અમને આવું ચારિત્ર છે એવું કોઈક રીતે એમને માન કસાય પોસાય, તો એવા સૂક્ષ્મ બંધ પણ પડે. એટલે એ બંનેમાં ઘણો તફાવત છે, મહાન અંતર છે. અને અહીંયા કહે છે કે કારણ કે જ્ઞાની મુનિ તો શરીરને પણ જીવથી ભિન્ન જાણી તજી દે છે. તજી દે છે એટલે કે એના તરફ ની દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે. તજી દે છે એટલે કે હવે એ શરીર પોતાનું છે જ નહીં, પોતાને આ વર્તમાન પર્યાય છે જ નહીં, અને વર્તમાન પર્યાય પ્રમાણે જે શરીર પ્રાપ્ત થયું છે તો એ શરીર પણ પોતાનું નથી, એવી એમની પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, અને એમ જ આચરણ પણ થઈ રહ્યું છે. શરીરની મમતા તજી સ્વરૂપમાં એ તો લીન રહે છે. જ્યારે દ્રવ્યલિંગી મુનિની ભેખમાં જ આત્મબુદ્ધિ છે, જે વેશ લીધો છે, ભેખ લીધો છે, બાહ્યમાં જે ચારિત્ર લીધું છે, 28 મૂળ ગુણ સહિત જે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું છે, બસ એની સભાનતા જ રહે છે, અને એમાં જ પોતાપણાની બુદ્ધિ છે. વિતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાનવાળા મહામુનિ સર્વ પદાર્થોથી આત્માને જુદો જાણી દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ તથા નો કર્મ કે પોતાના દેહમાં પણ કોઈ પણ પ્રકારે મમતા કરતા નથી. કર્મના ઉદયો આવે, કર્મના ઉદયને કારણે સંયોગો સર્જાય, વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય, સાતા અસાતાના ઉદયો હોય, આ બધું હોય, પણ છતાંય એમાં કોઈ પ્રકારે એ એકત્વ મમત્વ કાંઈ કરતા નથી. પ્રતિકૂળ સંયોગો હોય કે અનુકૂળ સંયોગો હોય, એ કોઈ સંયોગો સાથે જ્ઞાની ધર્મી જોડાતા જ નથી. અહીંયા કહે છે કે એમ એ મમત્વ કરતા નથી, તો પછી માતા પિતા આદિ પરિવાર જે સ્વયંમેવ ભિન્ન જ છે, એક જુદો જ છે, ભિન્ન દેખાય જ છે, તો તેમાં તો એ મમતા કરે જ ક્યાંથી? આ સ્વ પર ભેદને નથી જાણતા એવા અજ્ઞાની મૂંઢ પર પદાર્થોમાં સ્વપણાની માન્યતા કરીને અત્યંત દુઃખી થાય છે. જે પોતાનું નથી અને પોતાનું માનવામાં એ જ્યારે પોતાનું માને છે ત્યારે પણ એને એ વિભાવ ભાવરૂપ થવાને કારણે ખરેખર તો દુઃખનો જ અનુભવ છે. પર પદાર્થો ને પોતાના માને છે, બીજા જીવોને પણ પોતાના માને છે, એટલે એને એ બધા પ્રત્યે અપેક્ષા હોય છે, અને જે અપેક્ષા એ રાખે છે એવી અપેક્ષાની પૂર્તિ નથી થતી, એટલે એને દ્વેષ પણ થાય છે. એટલે રાગ અને દ્વેષ બંને થાય છે. પરમાં પોતાપણાની બુદ્ધિને કારણે રાગ થાય છે, અને પછી પોતે જેવું ઈચ્છ્યું છે એમ પરમાં થતું નથી તો દ્વેષ પણ થાય છે. એટલે સ્વ પરના ભેદને નહીં જાણનાર અજ્ઞાની મૂઢ પર પદાર્થોમાં સ્વપણાની માન્યતા કરીને અત્યંત દુઃખી થાય છે. એ વખતે તો દુઃખી થાય છે, પણ પછી એના
કારણે એને આશ્રવને બંધ થાય છે, કર્મ બંધ પડે છે અને કર્મના ફળ આવે છે ત્યારે પણ ફરીથી એનું લક્ષ્ય કરીને એ દુઃખી થાય છે. એટલે કહે છે કે સ્વપરની માન્યતા, સ્વપણાની માન્યતા પરને વિશે કરી અને એ અત્યંત દુઃખી થાય છે અને બંધ દશાને પામે છે. જ્ઞાનીને પર પદાર્થોમાં આત્મબુદ્ધિ નથી. જ્ઞાની ધર્મીને પર પદાર્થોમાં આત્મબુદ્ધિ નથી, પોતાપણાની બુદ્ધિ નથી. પણ અજ્ઞાનીને આત્મજ્ઞાન ન હોવાથી પર વસ્તુઓમાં મમતા રહ્યા જ કરે છે. આ જ જ્ઞાની તથા અજ્ઞાનીઓમાં અંતર છે. સમ્યક જ્ઞાન નથી એટલે શું સ્વ છે, શું પર છે એના ભાન વિના એ અજ્ઞાની વર્તન કરે છે. અને એ મોટામાં મોટો જ્ઞાની અને અજ્ઞાની વચ્ચેનો ભેદ બતાવ્યો. અહીંયા તો મુનિની વાત મૂળ ગાથામાં તો લેવામાં આવી છે. તો આ રીતે 86મી ગાથા છે, એનો વિસ્તાર પણ આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીશું. અત્યારે પહેલા 85મી ગાથા જે ચાલુ છે એનો આગળનો ભાગ આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. એ પહેલા સહેજ પુનરાવર્તન કરીએ જેથી અનુસંધાન પ્રાપ્ત થાય. 85મી ગાથામાં મૂળ વાત એ કરવામાં આવી કે હે જીવ, અનેક તીર્થોમાં ભ્રમણ કરનારા મૂર્ખ જીવોનો મોક્ષ થતો નથી. કારણ કે જે જ્ઞાન રહિત છે તે મુનિ નથી પણ સંસારી છે. જ્ઞાન વિના તીર્થમાં જવાથી પોતાનો મોક્ષ થાય, મુક્તિ થાય એવી માન્યતા વાળાને અહીંયા મૂર્ખ કયા છે. એમાં એમ કહેવાનો આશય નથી કે તીર્થમાં ન જવું, પરંતુ તીર્થ સ્થાનમાં જવાથી પોતાને મુક્તિ મળશે એવી ખોટી માન્યતા, મિથ્યા માન્યતા સહિત જે તીર્થમાં જાય છે એ મૂર્ખ જીવોનો મોક્ષ થતો નથી. જે જ્ઞાનથી રહિત છે અને માત્ર એક ઊંધી માન્યતાને લઈને તીર્થમાં જાય છે એને કોઈ લાભ થતો નથી. જે જ્ઞાન રહિત છે એ મુનિ તો હોય નહીં અને મુનિ પણ નથી, એવું ચારિત્ર નથી, તો પછી મુક્તિ ક્યાંથી થાય? તો આ 85મી ગાથા ઉપર આપણે પૂજ્ય ગુરુદેવનું પ્રવચન આગળ લઈએ છીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 6, એના પાના નંબર 55 ઉપર અહીંયા છેલ્લી લીટીથી ગુરુદેવ આગળ આપણને સમજાવે છે. और अनेक मुनि जन रूपी राजहंसों को आदि लेकर तरह तरह के पक्षियों के शब्द से महामनोहर मुनि जन रूपी राजहंस ना आवाज आदि लेकर अनेक प्रकार ना पक्षियों के शब्द से महामनोहर अरंत वितराग सर्वज्ञ अरहंत अरंत शब्द अरंत शब्द संस्कृत में अर्थ है अरहत वितराग सर्वज्ञ स्वरूपम आ तो अरिहंत कहते अरहंत वितराग सर्वज्ञ यही निश्चय से महातीर्थ देवेंद्रो चक्रवर्तियों गणधर आदि ध्वज रूपी तीर्थ यात्रियों के ये भगवान तीर्थ है। ये जी व्यवहार हो व्यवहार तीर्थ में ऊंचा तीर्थ ये है व्यवहार હાજરી નથી કે છે હું તીર્થ હોય કે જ્યાં દેવેન્દ્ર ચક્રવર્તી સંતો યાત્રીઓ જે છે એ યાત્રીના ટોળા છે એને સુકારી દીધું ધની ભગવાનનું શબ્દો કે અને મુનિઓ પણ અંદર ચર્ચા કરતા હોય વાણી શબ્દવાદ પક્ષોના અરંત વિતરાગ સર્વ वे नीचे से महातीर्थ है
उनके समान तीर्थ नहीं। वायना तीर्थ पण तीर्थंकर सिवाय बीजू तीर्थ तो नहीं है। समझाऊं कहाँ है? यही संसार के तरने के कारण परम तीर्थ है। जो परम समाधि में लिंग महामुनि है उनके यही तीर्थ है। ये खरे खट्टे तो पोते थे अपना स्वरूप निश्चय नहीं से निज शुद्धात्मा जो तत्व के ज्ञान के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। बोले तो व्यवहार तीर्थ है। निश्चय नहीं से बोला व्यवहार तीर्थ हो એને પણ મામુનિ નથી હતી। निश्चय तो निज शुद्धात्मा तत्व के ध्यान के समान निज शुद्धात्मा का तत्व का ध्यान के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। तो भगवान અત્યારે નથી ને તમે આ વાત અત્યારે કરો કોઈ ટીકા કરે તો હરિયન ભગવાન તો है नहीं અત્યારે તમે આવી મોટી મોટી વાત સાંભળો તો કરો। સાક્ષાત ભગવાન હોય મા તીર્થ છે આ તીર્થ એ પછી સાધારણ વ્યવહાર તીર્થમાં હો પુન બંધના કારણમાં તીર્થ અર્યંત तीर्थ पुण्य बंधवाना कारण महातीर्थ है। जहाँ तीर्थ निकले यात्रियों कुंडाचार को हम सौदे यात्रा करने को गए थे ना भगवान की यात्रा करने को गए। आज दिन रही साक्षात सौदे यहाँ બધા તીર્થો તો ઘણા હતા ગિરનાર में साक्षात तीर्थ ये है तो क्या गई व्यवहार हो। निश्चय में तो भगवान आत्मा ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद का पूर्व अतीन्द्रिय आनंद का जल का प्रवाह ना पूर्व उसमें लीन होना। अरे વ્યવહારની તો ગણતરી કરતા છે વ્યવહાર હોય છે એમ કહ્યું હોય છે પણ એનાથી નિશ્ચય તીર્થ થાય છે એમ નથી। સમજમાં આવ્યા? વ્યવહાર હોવો નિમિત્ત હો એ નહીં કરો વિષય નહીં પણ વ્યવહાર ને નિમિત્ત કાર્યક્રમ નહીં। કાર્યક્રમ નહીં તો પછી વ્યવહાર શું કરવાનો? શું વ્યવહાર આવે? जब लोग धूतरागता न हो पूर्ण सर्वज्ञ न हो तो बीच में का आश्रय है अपूर्ण है। पूर्ण आश्रय बिना पर का आश्रय रागा बिना रहे नहीं है। ये बंद का कारण निश्चय मोक्ष का मददगार है ऐसा नहीं। समझ में आया? और व्यवहार नहीं से तीर्थंकर परम देवादि के गुण स्मरण काल मुक्ता से सुबंध के कारण व्यवहार थी तीर्थंकर परम देवादि देव के गुण स्मरण का कारण एम के शू के आ तीर्थो है तो तीर्थंकर आदि गुण स्मरण नु कारण है। જ્યાંથી મોક્ષ વધાર્યા હોય છે નિરાલિત માં ગુણ છે સ્વભાવ
समझाऊं कहाँ है? धर्मदेवादि देवादि के गुण स्मरण के कारण, मुख्यतः से सुमन के कारण ऐसे जो कैलाश, समित शिखर, आदि निर्वाण समास्थान है, ये निर्वाण स्थान ही शुभ भाव कारण है। गुण स्मरण થાય ગુણ સ્મરણ થાય શું વિકલ્પ કરાવે? સદગુણ લબ્ધ આવે છે ને તમારા ગુણની પ્રાપ્તિ માટે વંદુ છું, વંદન તો વિકલ્પ છે પણ મારા ગુણના સ્મરણમાં એ આવે છે નિમિત્ત કેમ કેવા મારે તમારા ગુણની પ્રાપ્તિ માટે તમને બંધન એના ગુણ તો અહીં આત્મા એની પ્રાપ્તિ માટે બંધનનો તો વિકલ્પ છે, એનાથી કઈ બંધન થતું નથી. ઘણા એમ કે છે આત્મા જો સદગુણ લબ્ધ થઈ તેના ગુણની પ્રાપ્તિ માટે ને બંધન કરું ભાવાર્થ સમજવો પડે અને તાત્પર્ય સમજાવીને એમ કે कैलाश समेत आदि निर्वाण स्थान है, व्यवहार मात्र तीर्थ कहे, व्यवहार मात्र तीर्थ कहे। जो तीर्थ तीर्थ परिभ्रमण करे और निज तीर्थ का जिसके सिद्धांत परिणाम आत्म नहीं, तीर्थ करवा निकलती સાંભળવાય ન રમો ગિરનારથી ચાતર નાયથી આ નાયથી આપણા સાચું સાંભળવાનું આવશે શુભ નથી, મેળા કરતા શુભ વિશેષ છે. ઘણા સર્જાતો હોય ને બસ પાણી જાય, બસ પાણી જાય, અમે ધોળા ધોળીના 5 કલાક આવી જાય અને તો જોઈ જાય ને ભાગે. હવે તો આ તીર્થ નાખ્યો છે ને, અમે નાખ્યું હતા કોંગ્રેસ તીર્થમાં નાખ્યું તીર્થમાં છે ને પુસ્તક પૂરવાનું સાઉજી તરફથી અહીંયા છે ને કોંગ્રેસને તીર્થ થતું નથી. ત્યાં કોઈ અતિશય ક્ષેત્ર નથી, ત્યાં કોઈ નિર્વાણ ક્ષેત્ર નથી, પણ ધર્માત્મક જ્ઞાન જવાનો કેન્દ્ર સ્થાન છે. એમ બધું છે. કોંગ્રેસ પણ તીર્થ છે, મોટું લખાણ આવ્યું છાપવાના. આ એ વ્યવહાર તીર્થ છે. આવી વાત છે. મોટો ભગતરામ એને લાગે, ભગતરામ છે ને દિલ્હી, તેને પ્રેમ છે. એ ત્યાં આવ્યા હતા કોટામાં આવ્યા છે ભગતરામ, વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા. આનો પ્રેમ હતો ત્યારે સાંભળીને કે ઓહો આવી વાતો ક્યાં છે. સામાજિકમાં છે, સામાજિકમાં બહુ ભાગ ભગતરામ. સમાજ ભેગા થાય એ બી એમ બોલ્યા કોટામાં વ્યાખ્યાન સાંભળ્યા. ક્યાંય છે વાત સાચી, બચાનો રસ પણ પાછો સામાજિકમાં જ્યાં ત્યાં એક વાર સાંભળે બે ચાર દી આરતી આ શું છે, આ જોઈ નહીં એને માટે આપણું થતું ક્યાં એવું નહીં તો એને ક્યાં થઈ સમજાય. और निज तीर्थ का जिसके सिद्धांत परिज्ञान प्रण
भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन ये निज तीर्थ, उसका जिसको सिद्धांत नहीं, संचित नहीं, उसका परिज्ञान, देखो परिज्ञान है पाठ में, सिद्धांत परिज्ञान अनुष्ठान, तो ये उसका आत्मज्ञान, आचरण नहीं हो, आत्मा में रमना हो, आचरण नहीं है, ये तो अज्ञानी है। निज સ્વરૂપની શ્રદ્ધા જ્ઞાન ને આચરણ નથી, ત્યાં આવા તીર્થમાં ભમે છતાંય તો મૂંઢ નહીં છે। उसके तीर्थ भ्रमने से, तीर्थना भ्रमने से मोक्ष नहीं हो सकता। ये तीर्थनी भ्रमणा करे लाख करोड़ उड़ावे। निज तीर्थ विना पर तीर्थ की मुक्ति कभी नहीं होती। बहुत सरसा दोनों आश्रय करीने श्रद्धा ज्ञान ने रमणता ये मोक्ष नो मार्ग ने ये तीर्थ यथार्थ है। परमात्मा प्रकाश शंकर सुधाकर कही ने आज कुमकुंदाचार्य महाराज का दिन है। आया न चला हिंदी को जुटाया नहीं। हिंदी वाला गया था ना कहीं ये नहीं कहीं आएगा। आज कुमकुंदाचार्य का आचार आरोहण दिन है। पोषोदाश्रम सिद्धांत आगम की पोषोदाश्रम है, लौकिक में मास्टर उदाश्रम है। आचार पद मिला था वो छोटी उम्र में मिला था, एक अंदर लखाने से पीछे आचार पद जिनचंद्र का गुरु था, उसके पास उसने दीक्षा लिया और आत्मा वैभव प्रकट किया। वो 5वीं गाथा में आता है ना, 5वीं गाथा हमेशा मेरे को निज वैभव कैसे मिला। आत्म वैभव, अधूर वैभव नहीं, पैसा न राजपाट है तो ढूंढना वैभव है। अपना निज वैभव उसमें तो ऐसा लिखा है पंचम गाथा में, महावीर स्वामी भगवान त्रिलोकनाथ निर्मल विज्ञान घन में लीन था। નથી જતા બીજું છે આમાં પૂરું નથી, બીજું છે પુસ્તક છે એ આંબળામાં। આ પુસ્તક બરાબર સાધારણ વાંચન, બીજું પુસ્તક થાય जिनचंद्र उसका गुरु। और वो ऐसे लिखते हैं कि हमारा आत्म वैभव कैसे प्रकट हुआ कि निर्मल विज्ञान घन जो भगवान महावीर उसमें निमग्न था। पंचम गाथा में और पीछे गणधर भी अपना निर्मल विज्ञान घन में निमग्न था। दरेक ने शब्द एक बात है। और हमारा गुरु प्रियंत मुनि, हमारा गुरु निर्मल विज्ञान घन में निमग्न था। हाँ व्याख्या करी पंच महाव्रत पावते से नगन थे, ये बात नहीं लिया है, ये तो बाइक थी। अपना स्वरूप जो आत्मा निर्मल विज्ञान घन है, उसमें विकल्प का प्रवेश नहीं। संसार का विकल्प जो है उसका प्रवेश नहीं। ऐसी चीज में
हमारा गुरु पर्यंत भगवान से मान लेकर यहाँ तक सबको एक न क्या मुनियो सबको एक न एवड़ी भी निर्मल विज्ञान घन में निमग्न है और पीछे गणधर से हमारा गुरु पर्यंत निर्मल विज्ञान घन जो आत्मा स्वभाव बराबर उसमें मग्न तो संस्कृति भी है ना तो निमग्न ऐसी सुंदर समझ में आया। सम्यक दृष्टि भी सम्यक दर्शन में अपना निर्मल विज्ञान घन की रुचि मग्न है, राग में मग्न नहीं। अने मुनि जो है मुनि किसको कहे, ये तो निर्मल विज्ञान घन चैतन प्रभु अनंत चैतन प्रकाश नो पूर्ण नूर तेज ऐसा निर्मल विज्ञान घन में मग्न नहीं पर निमग्न था। समझ में आया। तो उसके गुरु ही हमको ऐसा उपदेश मेहरबानी करके दिया, शुद्धात्मा का उपदेश है सपाटक बराबर। तो शुद्ध दूसरी बात किया ही नहीं। हमने हमारा गुरु जी ठीक भगवान महावीर से हार लेकर हमने ये उपदेश दिया शुद्धात्मा, उससे हमका हमारा निज वैभव आनंद का वेदन ने आनंद का अनुभव वो ही मेरा वैभव है। ये वैभव की छाप क्या, उसमें छाप पड़ता है कि नहीं? तो कहते हैं कि हमारा निज वैभव में आनंद की मोर छाप है। आनंद उसमें पांचवी का था। अपना स्वरूप आनंद घन निर्मल विज्ञान घन, उसका अनुभव, उसका मोर छाप क्या, ट्रेडमार्क क्या, अतीन्द्रिय आनंद झरते हैं हमारी पर्याय में, अतीन्द्रिय आनंद आते हैं अंदर, ये उसकी मोर छाप ट्रेडमार्क है। ऐसा आता है जो को एक बातें फिर है निर्मल विज्ञान घन से लेकर भगवान से अपना गुरु तक लिया, पंचमावर पाते थे मग्न रहते थे, ये बात में किया। यही तो बात चीज है, ये कि मुनि पढ़ा नहीं। ऐसे आचार्य उसका गुरु ये आज आचार पद आरोह दिया, समझ में आया। उसकी लायक देकर पुष्पदाशम ये आचार पद कुदरते इसकी लायका से मिलते हैं, प्राण यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है। ये थी तृण पद में आया ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुंदाचार्य, तीसरे नंबर है कुंकुंदाचार्य है। बीच में साधु बाधु सब छोड़ दिया तो उसका समाधान नहीं हुआ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, सनातन दिगंबर धर्म में जैन धर्म में तीसरे नंबर है कुंकुंदाचार्य। समझ में आया। ये कुंकुंदाचार्य का आचार्य होना आदमी नहीं बराबर, पुष्प आचरण। और पीछे तो बहुत चर्चा चलिए, गिरनार में गए थे भगवान कुंकुंदाचार्य, यहाँ श्वेतांबर संघ भी आए थे, उसने बड़ा गुस्सा रहना आपद में कुछ भी पीछी न वार ने आचार को नहीं बचाया कर नहीं निकालिए पुस्तक में कुछ नहीं એમાં શેકડું થોડું મુખ્ય નથી, આ બીજું પુસ્તક છે એ ભીમચંદ્ર આચાર્ય એમણે આચાર પર દિયા
और आचार पद में गिरनार जात्री दी थी, यात्रा यहाँ सीतामढ़ संघ आया था, दो हुआ वाद, वाद करते करते बहुत वाद बिगड़ा हुआ, आखिर में कहा कुंकुंदाचार के लिए एक अम्बा देवी है, पत्थर नहीं, ये बोलेगा क्या है, ये तो है, ये तो है ना, आरती है ना, खबर तो ત્યાં પછી તેને ઉત્તમ રીતિ થઈ વાંચું છું ખબર, અહીં 18 લખાનું દુઃખ આરતી ગઈ, એ તો છે જૈન ધર્મનો પ્રચાર કર્યો ને બધું છે, અને વિશેષ વાત તો બીજું તિથિ છે, એના વર્ષ કેટલા વર્ષે આચાર, કેટલા વર્ષે દીક્ષા અને કેટલા વર્ષે દેશ નીકળ स्वर्ग में गई, ये सब है हम उसमें समय में आया, सब देखा है नहीं, यहाँ तो नहीं सब कर दिया हुआ है, आपने નથી મૂળ શાસ્ત્ર આમાં તેનો એવી કુંકુંદાચાર ત્રીજે નંબરે आया, देखो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम, भगवान पासे गए थे, ध्यान में बैठे थे, यहाँ जाओ कुंद है ना आश्रम ऑन हिल, यहाँ गई थी हम संघ से साथ में, बहुत मानस से 1000 मानस मोटर से स्थिति साथ में, ત્યાં આગળ कुंकुंदाचार ध्यान में थे, એમાં सिमंदर भगवान का विरह, हमारे भगवान विरह, भगवान नहीं, तो अंदर में भगवान को नमस्कार किया, तो ત્યાં जो सिमंदर भगवान को अभी विराट है, शंकर देव केवली परमेश्वर है महावीर क्षेत्र में, तो उसकी जीवधनी में ऐसा सद्धर्म दिया उसको, उसमें है वो, उसमें बेटा आमा है सद्धर्म दिया, उसको ऐसा आवाज आया, लोगों आश्चर्य पाने का क्या क्या आवाज कुछ आया, यहाँ मुनि आया, कुंकुंदाचार नग्न मुनि दिगंबर भगवान पास, और छोटा शरीर क्या बैठना, यहाँ तो 5-6 धनुष को दे, भगवान पास है, भगवान का 5-6 धनुष का 2000 हाथ ऊंचा है, भगवान बिराजते हैं देवी बराबर, तो चक्रवर्ती दूसरा दे रहे उसको, भगवान बिराजते का नजीब बैठाया, क्योंकि 4 हाथ है, वो 2000 हाथ, ये पद्मनंद आचार्य जो त्याना चक्रवर्ती था, हाथ में लेकर महाराजा कौन है, कुंकुंदाचार ने हाथ में ले, 2000 हाथ ऊंचा है ना, 4 हाथ है, पतंग जी जैसा जगह पतंग है, कौन है महाराजा, भगवान के श्रीमुख निकला कि भरत क्षेत्र का चारित्र है, अध्यक्ष चारित्र का आचार्य है, समझ में आया, पीछे से 8 दिन रहे, भगवान की साक्षात वाणी सुनी 8 दिन, और चर्चा कितनी शुद्ध केवड़ी मुनियों का किया, पीछे आकर शास्त्र सब बनाया, समय साक्षात देवधनी का सार है, गिरवाई आ मारेंगे भाई, जीणो मारेंगे, ये समय सार में जो अधिकार है, ओहो अलौकिक अधिकार, मुनिपना किसका आ निर्मल विज्ञान घन में लीन होना मुनिपना, समझ में आया, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, ये व्याख्या वैज्ञानिक का दर्शन कहते, भूतार्थ भगवान त्रिकाल चिदानंद प्रभु जो है, क्या खबर नहीं क्या थी, सत्यार भूतार्थ भगवान आत्मा है, त्रिकाल उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है,
धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की प्रथम शुरुआत भूतास भगवान त्रिकाल स्वरूप चैतन्य खंड, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? और उसके अग्र आश्रय से मुनि को होता है। हाँ हाँ हाँ, वाह सर्वज्ञ शिवाय अने कुंदाचार शिवाय, ऐसी बात क्या है नहीं। समझ में आया? अलौकिक बात है, वो बात यहाँ करते हैं लोग। साक्षी और आगे ज्ञानी अज्ञानी यतियों में बहुत बड़ा भेद दिखाते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी मुनियों में बड़ा भेद है, बहुत अंतर है। शास्त्र सिद्धांतों पर काशी नानी मुंडा मुनिवरांत मंतु देव मिलई नानियो जीवं भिन्नु मंतु। सम्यक दृष्टि भाव लेंगी जो शास्त्र का शब्द है, इसको आत्मज्ञान हुआ है। राग की क्रिया से भिन्न भगवान आत्मा, दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि का भाव सब राग है। ये राग से भिन्न आत्मा शुद्ध चैतन्य खंड, उसका अनुभव, ये सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि भाव नहीं, ऐसा समझ लिया है। यानी अंतर निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, वो सही मनीपना, वो भाव लिंग है, जिसको भाव लिंग प्रज्ञा है। यही बात भाई। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुंडा नाम, जिसकी दृष्टि राग से लाभ होता है, व्यवहार करते करते नीचे होता है, ऐसी दृष्टि है मुंड। द्रव्यलिंगी है। शास्त्र ना सुन रहे हो, शास्त्र तो बात समझ करे, पास है न पास है। अंतर विशेष होते चले। क्यों? ये मुनियों को बड़ा भारी भेद है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में बड़ा भेद है। द्रव्यलिंगी यानी भावलिंगी में बहुत फेर है। क्योंकि ज्ञानी मुनि तो शरीर को भी जीव से जुदा जानकर, शरीर जो नजीक में नजीक चीज है, एक क्षेत्र में रहने वाली, उसको भी अंदर भिन्न जानते हैं। शरीर की क्रिया चलती है, वो भी आत्मा से भिन्न है। ये तो जड़ की क्रिया है। यही बात बापू। અને શરીરના અંગો, વાણી, મન અને શ્વાસ, ये शरीर अंगो है, ये भी आत्मा से भिन्न है। समझ में आया? श्वास चलते ना, श्वास और मन है यहाँ अनंत परमाणु का पिंड विचार करने में निमित्त, और वाणियां है, श्वास और शरीर, इस शरीर का सब अंग है। तो उससे भी आत्मा को भिन्न जानते हैं, वाणी से, मन से, श्वासोश्वास से। ये क्रिया मेरी नहीं, श्वास चलते हैं, ली चलते हैं, ये क्रिया मेरी नहीं, ये तो जड़ की क्रिया है। समझ में आया? मुनियों में बड़ा भारी भेद है। क्यों? ज्ञानी मुनि तो वेद को भी है, दूसरी चीज तो क्या कहना, पुत्र स्त्री की कैसे, मकान की शीशो तो कहीं दूसरी चीज है भिन्न,
पर देह को भी अपने मानते नहीं। हाँ, वाणी को भी अपने मानते नहीं, श्वास को अपने मानते नहीं, मन को अपना मानते नहीं। हाँ, योगेंद्र देव 1300 वर्ष पहले हुआ है, परमात्मा प्रकाश, सब में समय सार की छाप है। देह पी देह पी એટલે दूसरी चीज तो क्या कहना कैसे। मेरा चित्र है, मेरा मंदिर है, मेरा शीश है, ये तो कहीं दूर रही बात है। देह जड़ माटी धूड़ है, उद्गल जड़ अजीब है, और उसकी श्वास ही अजीब है, मन अजीब है, वाणी अजीब है। उसको जीव से जुदा जानकर छोड़ देते हैं। छोड़ देते का अर्थ शरीर से तो पड़ा है, उसकी ममता छोड़ देते हैं, ये मेरा है ऐसे छोड़ देते हैं। अर्थ ऐसा है, मनमानम मुचंती छोड़ देते हैं। उसका अर्थ किया, शरीर का भी मोहम्मद छोड़ देते हैं। शरीर मेरा है ऐसी मोहम्मद तो छोड़ देते, मेरी चीज नहीं तो जड़ है माटी, जगत की चीज अजीब उद्गल है। मैं तो उससे भिन्न चैतन्य चमत्कार आनंद कंद प्रभु, वो मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी मुनि भावलिंगी यथार्थ मानते अनुभवते हैं। आखिरी बात है, तो फिर पुत्र स्त्री आदि का क्या कहना है। दे हम पी शब्द थे ना, दे पण એટલે બીજી ચીજ નાખી પાસે। पुत्र स्त्री आदि शेषादि ये तो प्रत्यक्ष हैं, जुदे है। उसको तो ज्ञानी अपना मानते नहीं, अपनी ये क्रिया मानते नहीं। देह की क्रिया, वाणी की क्रिया, श्वास की क्रिया, मन की क्रिया जड़, उसकी अपनी मानते नहीं तो जड़ की क्रिया है। और द्रविलिंग मुनि द्रविलिंगी मुनि देख में आत्मबुद्धि को रखता है। शरीर नो देख नग्न में हूँ, पंचमहावृत का परिणाम ही मेरा है, पंचमहावृत का परिणाम तो राग है। नहीं, भेख में अपना मानता है, ये भेख है सब। समझ में आया? है वीतराग स्व संवेदन ज्ञानी ऐसा जी महामुनि पाठमा देह पी क्यों थी એટલે ખુલાસો કર્યો। મન વચન કયા હાથીનો લઈ લ્યા। દેહના અર્થમાં મન વચન ના દેહ બધું ત્રણે દેહ છે। मन है ये देह ना अंग है, वाणी पण देह नो अंग है, देह तो देह है। मन है छाती में अनंत परमाणु का बना हुआ रथ कमल में आकार है, पूजा छाती में जड़ है। आत्मा विचार करने में वो निमित्त है, वो भी जड़ है। वाणी जड़ है, आवाज निकलते जड़ है, अजीब है, पुद्गल है, माटी है। मन वचन काय खुलासा किया पाठ में એટલું હતું ને। દેહમ પી દેહ પણ એટલે એની સાથે મન ને વાણી દેહ માં નાખી દીધા। अपने को भिन्न जानता है। धर्मात्मा संत मुनि इसको कहिए कि अपना राग रहित वितराग स्व संवेदन ज्ञान और मन वचन ने काया को अपने से भिन्न जानते हैं। समझ में आया? अपने से भिन्न जानते हैं।
द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्मादि से जिसको ममता नहीं। धर्मात्मा महामुनि संकीर्ति को भी नहीं पढ़ा तो उसके मुनि पढ़ा देना है। द्रव्य कर्म जड़ कर्म है, 8 कर्म माटी जड़, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि 8 कर्म है ना अंदर, जड़ है। जैसा जड़ है, शरीर जड़ है, ऐसे कर्म जड़ है। ये जड़ से भगवान भिन्न है। जड़ में अपना ममता नहीं करते, कर्म मेरा है। भाव कर्म, पुण्य पाप का भाव, दया दान व्रत भक्ति का भाव, ये भाव कर्म है। उसको मुनि अपना मानते नहीं, मेरा ही ममता करते है। ये जो बात है, पाप का परिणाम तो भिन्न हो, पुण्य परिणाम उसमें ममता करते नहीं कि मेरी चीज है। इच्छा में गुण विकल्प है, भाव कर्म है। पंचमावर्तना परिणाम है, भाव कर्म है। इसमें ममता नहीं करते, मेरा है, उससे मेरे लाभ होगा। वो नहीं करते, हमको तो करना पड़ेगा। मुझको सम्यक दृष्टि को भी पर का अपना मानते नहीं। तो वितरागी विशेष ज्ञान की बात करती है। भाव कर्म ऐसे दया दान व्रत तप भक्ति पूजा जाता, ये भाव है। भाव कर्म विकार परिणाम है। उसमें सम्यक दृष्टि भी अपना मानते नहीं। मुनि तो विशेष स्थिरता में लीन है, तो वो मेरा है, ऐसी चीज उसे है। समझ में आया? अरे बापा बहुत जुनू भाई। विशेष टीकाकार खुलासा, जड़ कर्म जो अजीब है तो मेरा है ही नहीं, तो मेरे ही नुकसान करते हैं, ये भी है नहीं। और कर्म का यदि मार्ग हो तो मेरे लाभ होता है, ऐसा भी है नहीं। समझ में आया? कर्म पर है, उसमें घटे तो लाभ है, बढ़े तो नुकसान, ऐसी चीज है ही नहीं। सही बात है। और भाव कर्म, शुभ अशुभ भाव जो होता है, भाव कर्म में भी ममता नहीं, अर्थात मेरा है ऐसा है नहीं। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प मेरा है, ऐसा ही ममता नहीं हम कहते हैं। ये जो बात है, ये धर्मानुराग शुभ राग, पंच महावर्त का भाव, व्यवहार समिति गुप्ती का भाव, ये भाव कर्म है, राग है। तो सम्यक दृष्टि यानी मुनि राग में मेरा है कि ममता है नहीं यार। मन तो मेरी चीज, तो आनंद कंद वितरागी स्वभाव मेरी चीज है। समझ में आया? हाँ तो चाहे राग रही थी जाए चारे, राग रही तो जचा रहते बराबर। अभी राग रही तो भगवान है, चैतन दो सहजात्म स्वरूप, सहजात्म स्वरूप, सहज आत्म स्वरूप, अकृत्रिम आत्म स्वरूप, अण कराયેલો आत्म भाव, ये तो त्रिकाली आनंद कंद
उसमें राग का विकल्प का भाव है नहीं। बराबर। हाँ हाँ कहने 5 मामस पाववा ये तो નિર્ણયના કથન છે। હાજી समझ में आया? हाँ ये बात में आखिरी बापा એ રીતે ગાથા 85 નો વિસ્તાર પૂરો થયો અને 86 નો વધુ વિસ્તાર આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું। આજનું સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। સુખધામ અનંત સુસંત ચરી દિન